हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू वॉइस फॉर मेन इंडिया। काफ़ी समय के बाद आज हम इंटरव्यू कर रहे हैं एंड मुझे लगा कि ये जो इश्यू है जिससे आज हम बात करने वाले हैं जिनसे, वो एक बहुत यूनिक इश्यू है। ज़्यादातर हम जो भी इंटरव्यूज़ करते हैं या जिस इश्यूज़ पे बात करते हैं वो इंडियन मैट्रिमोनियल लॉज़ के अराउंड होते हैं। बट इस केस में जो हस्बैंड है वो एक इंडियन नेशनल है जो एक दूसरे कंट्री में काम करते हैं और उन्होंने एक दूसरे कंट्री या फॉरेन नेशनल महिला से शादी की थी और उनको कोई आइडिया नहीं था कि शादी का क्या ऑब्जेक्टिव था एटलीस्ट लड़की की तरफ से और उसके बाद उनके साथ क्या-क्या हुआ, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। ये इश्यू मैं इसलिए इम्पोर्टेंट और यूनिक बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी लोग ट्विटर पे ये लिखते रहते हैं कि इंडियन मेन शुड लीव इंडिया एंड मैरी ओनली वुमेन अब्रॉड, डोंट मैरी इंडियन वुमेन। लेकिन कोई भी देश हो, इश्यूज़ सिमिलर होते हैं। ऑफ कोर्स लॉज़ जो है हर कंट्री में अलग होते हैं, लेकिन आज इस टॉपिक पे या इस सिचुएशन पे बात करना मुझे ज़रूरी लगा। इसलिए हमारे साथ है राजेश जी। थैंक यू वेरी मच राजेश जी फॉर जॉइनिंग अस। धन्यवाद। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे राजेश जी का जो नाम है हमने चेंज कर लिया है। उनकी आइडेंटिटी हम अभी रिवील नहीं कर सकते क्योंकि उनका मैटर अभी कोर्ट में चल रहा है। ना ही हम उस कंट्री का नाम लेंगे जहाँ पे वो काम करते हैं अभी। तो राजेश जी थोड़ा हमें ब्रीफ में बताइए आप आपकी जो शादी है ये कब हुई? अ, किस एज में हुई? और आपने फॉरेन नेशनल लेडी से शादी क्यों की? आपको ये नहीं लगा कि मुझे इंडियन से ही शादी करनी है, जो प्राइमरीली इंडियंस का एक होता है कि इवन इफ यू आर वर्किंग अब्रॉड हमें इंडियन लड़की से ही शादी करनी है। तो थोड़ा इस पे ब्रीफली बात करते हैं पहले। जी। धन्यवाद मुझे बोलने देने के लिए। ये काफ़ी रेयर है, कोई सुनता नहीं था यहाँ पे। काफ़ी संस्थाएँ इनफैक्ट जस्ट क्योंकि मैं पुरुष हूँ इसलिए भगा देते थे कि आपकी आपकी तकलीफ़ सुनना ही हमारी पॉलिसी का पार्ट नहीं है, आप जाइए, सो कोई अगर बोलने भी देता है तो बहुत बहुत बड़ी चीज़ लगती है, which should be such a छोटी चीज़ लगनी चाहिए बट अनफॉर्चुनेटली हमारे जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बन जाती है। बट हाँ, तो मेरी शादी 2019 में हुई थी यहीं पे, इस फॉरेन कंट्री में, मतलब रजिस्टर यहीं हुई थी। I'm sorry। फिर उसके कुछ महीने बाद हम वापस इंडिया भी जाके वो रजिस्टर तो नहीं पर वहाँ के सेरेमनी के हिसाब से, हमारे कल्चरल सेरेमनी के हिसाब से इंडिया में भी की थी। मैं 19 में तो मतलब था 33 साल का, ऑलमोस्ट टर्निंग 34, 34 का होने वाला था। और मेरा मतलब जिस तरह से मुझे बड़ा किया गया था मेरे परिवार में, और मैं इसको अच्छा अच्छा ही मानता हूँ कि ऐसा कुछ जोर जबरदस्ती कभी नहीं की थी कि इसी धर्म की लड़की होनी चाहिए, इसी इसी संप्रदाय की लड़की होनी चाहिए, कोई भी हो, अच्छी लड़की हो, औरत रादर, लड़की तो नहीं, अच्छी स्त्री हो वो मुझसे, तो दैट दैट वाज द बेसिक क्राइटेरिया। अब बाहर होने से मतलब ऐसा आई डिड नॉट रियली फील लाइक गोइंग आउट ऑफ द वे टू मैरी एन इंडियन, मतलब जबरदस्ती इंडियन से ही शादी करनी ऐसी फीलिंग कभी आई नहीं। अगर इंडियन होते तो भी कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती, ना होते तो भी, बट बाहर है तो इट वाज आई थिंक जस्ट ऐसे मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी पे ही बेस्ड है कि ज्यादातर औरतें इंडियन नहीं होती, तो मैथमेटिकली स्पीकिंग पॉसिबिलिटी ये है कि जिस जिस जो ज्यादा औरतें यहाँ हैं, पॉपुलेशन जिनकी ज्यादा, उन्हीं से आपको कोई मिलेगा, वो था। कल्चरली आप बिकॉज़ आप वहीं पे काम कर रहे हैं, कल्चरली आप उनसे शायद ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ। नहीं नहीं, वो भी नहीं था। कल्चरल वैल्यूज एंड मेच्योरिटी एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स वाज आल्सो, मतलब मेरे लिए बहुत महत्व का था। बट
इट्स लाइक अगर किसी जगह पे आप रह रहे हो वहाँ पे 5,000 स्पेनिश लड़कियां हैं और 5 इंडियन लड़कियां हैं, तो मैथमेटिकली ज्यादा पॉसिबल है कि आपको शायद वो 5,000 में से कोई अच्छी लगेगी। नॉट दैट वो 5 इंडियन लड़कियों में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट जस्ट दूसरी बात, इफ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, एक इनका नाम दीपिका भारद्वाज जी हैं, इंडिया में। शादी से पहले मैंने देखी थी उनकी ये डॉक्यूमेंट्री मैटर्स ऑफ मैरिज, और ऐसे कुछ वाकया भी बने थे मेरे परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली फ्रेंड्स में इंडिया के, जिनको काफी तकलीफें हुई थी। तो मतलब इतना कुछ इन डेप्थ नॉलेज नहीं था मुझे इंडियन मैट्रिमोनियल लॉज का, बट जो कुछ इनके एनेक्डोटल चीजों से पता चला, मुझे काफी, एक टू बी ऑनेस्ट थोड़ा डर लग रहा था शायद। और ऐसा नहीं था कि जिस कंट्री में मैं हूँ उसके भी लॉज मुझे बहुत पता चल गए थे, आई वॉज फेयरली क्लूलेस, पर आई हैड सम आइडिया अबाउट द इंडियन लॉज बेस्ड ऑन दीज पर्सनल, लोगों को जिनको मैं जानता था उनके साथ काफी बुरा हुआ हो रहा था। बच्चों से मिलने नहीं दे रहे थे, बड़े बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट में, वे बियॉन्ड देयर फाइनेंशियल पोटेंशियल, बहुत बड़ी अमाउंट में पैसे मांगते थे, एक्सटॉर्शन इन अ वे एंड दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो थोड़ा डर था, आई मस्ट बी ऑनेस्ट विथ यू। सो it's not so much, I must say this, and so about Indian women or women in general, it is not so much that I think कि औरतें बुरी होंगी सब, क्योंकि एक बुरी औरत इतनी शक्तिशाली नहीं होती। डर लगता है उन शक्तिशाली संस्थाओं से, अथॉरिटीज, लॉ एनफोर्सेस, जो ऑब्वियसली काफी पावरफुल है एक एक आदमी से, एक छोटे से परिवार से। सो उनकी उनका पावर बहुत ओवरवेलमिंग होता है। उनके सामने लड़ना सिंगल हैंडेडली विदाउट एनी लाइक टैक्स पेयर फंडेड सपोर्ट सिस्टम्स, तो इसीलिए so maybe that was the back of my mind, and also because I was outside India, तो जो जो इंसान उस समय मुझे ठीक लगा उसके साथ I courted her for some time, dated her for some time, and then decided to marry her. Rajesh, can you tell us exactly how many months or years did you date her? और जब आप डेट कर रहे थे, were you in live-in relationship जैसे आपने मुझे बताया था? If you can share that as well. ये डिटेल्स मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी होता है कि आपने शादी से पहले कितना समय साथ बिताया है, to understand whether you should take that plunge ahead. जी, yeah, I guess I can try to answer your question briefly, जो मेरी थोड़ी weakness है। In person dating, I think we did for about 2.5 months, and we were still together, and पर मैं फिर overseas गया था कुछ महीनों के लिए, leaving this country to travel a bit for another 2.5-3 months. We were still together, but and then when I came back, she pushed के चलो साथ में रहते हैं, and not in a place that I was actually staying at. मैं एक बड़े शहर में रहता था उस समय, and she was staying in a small country town. तो without giving you the specifics, like थोड़ा होता है country towns में, there's a less exposure for people, and एक दूसरे को लोग जानते हैं, and there's ample racism there as well. But for her, I thought, because उसके काफी परिवारजन वहाँ पे थे already, तो she was like, इसलिए मैं यहाँ रहना चाहती हूँ. So I moved there for her for about another 3.5 something months. We live in में रहे वहाँ पे, and then we got married early 2019. Right. So less than 6 months if we put everything together. About 8 months altogether. About 8 months. Okay. Okay. जी. एंड आपने अपने पेरेंट्स को बताया था दैट यू वर इन लिव इन, या ऑल दीज थिंग्स उनको इंडिया में पता था?
जी, जी, सब पता था। इनफैक्ट they came towards the like month or so before, month or two before the wedding. So they wanted to not only come for the wedding but also उनकी होने वाली बहू के को जान पाए, उनसे मिल पाए, बॉन्ड कर पाए, एंड दिवाली भी साथ में मना पाए, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। सो दे डिड कम। राइट। और उस समय में ना आपको ना आपके पेरेंट्स को कुछ भी अलग नहीं लगा, मतलब यू थॉट एवरीथिंग वाज फाइन और बिल्कुल रेडी थे मैरिज के लिए, कुछ भी आपको उसके बिहेवियर में या कोई भी ऐसा कोई इंस्टेंस नहीं था जिसमें आपको लगा कि शायद शायद मुझे सोचना चाहिए एक और बार? नथिंग मैसिव। अभी हम इन हाइंडसाइट देखे तो यू ऑफ कैन कोर्स। सॉर्ट ऑफ स्पेकुलेट फॉर क्लूज, या बट इतना कुछ बड़ा भारी कुछ रेड फ्लैग जैसा नहीं लगा उस समय। ठीक है, फिर 2019 में आपकी शादी होती है। जी। उसके बाद हम दोबारा अब जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ है आपकी, उस पे आते हैं। और मैं व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगी कि मैंने राजेश जी से परसों काफ़ी लंबी बात की है, तो मुझे बहुत डिटेल्स पता है, लेकिन वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर नहीं कर सकते। तो जो मेन चीज़ें हैं, हम उन पे टच करके डिस्कस करेंगे। सो 2019 में शादी होती है, उसके बाद इनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, आपने मुझे बताया था। तो ये कब से स्टार्ट हुआ, विदिन हाउ मच टाइम ऑफ मैरिज, और ये क्या चेंजेस थे? It is so weird. The day after we got married, हनीमून पे गए भाई, लोकली ही, इनफैक्ट ना कुछ दूर नहीं, पर या ऑन द हनीमून इटसेल्फ बहुत ही भयानक, मतलब रेडिकल चेंज आ गया बिहेवियर में। इट्स लाइक एक काम हो गया मेरा, अब चलो आई विल स्टार्ट माय स्टेप्स टू, मैं उसकी तरफ से बोल रहा हूँ, नाउ आई स्टार्ट माय मूव्स टू start pushing this man away in a certain way. I still have some कुछ इससे और भी कुछ मुझे निकलवाना है, वो उसका मैं करूंगी, but let's start pushing this guy away. मतलब एक कंट्रोल मैकेनिज्म है, it's not so much to just to push you away, but मैं इस पे हावी हो जाऊं. So one of the things it would be important to know, she's much bigger and stronger than me physically speaking, and which played into one of the horrible things that happened soon after. तो आप बोल रहे इमीडिएटली फ्रॉम द टाइम यू आर ऑन हनीमून, तब से ये चीजें शुरू हुई। लेकिन उसके बाद भी आप इंडिया आए थे फॉर डूइंग अ रिसेप्शन काइंड ऑफ थिंग फॉर योर जी, फैमिली बैक इन इंडिया। तो तभी फिर भी ठीक था, नॉर्मल था सारा? yeah, no. So if I may say this, so those two instances of ये बोलना थोड़ा हमेशा अजीब लगता है, क्योंकि काफी लोगों को पता ही नहीं होता, तो आई डोंट नो, हंसा भी गया था मुझ पे यहाँ पे by authorities. So sh- she had committed female on rape on me twice, uh, between the time of getting married here and just before going to India for the reception. And I इस पे mean, when, खुल के बात कीजिए राजेश जी, बिकॉज आई थिंक ये लोगों को जानना जरूरी है। एज यू राइटली सेड, द फर्स्ट रिएक्शन पीपल गिव इज दे विल लाफ कि ऐसे तो कभी हो नहीं सकता। बट आई थिंक बिकॉज आप इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं, तो एज एंड हाउ यू आर कंफर्टेबल, आप इसको थोड़ा डिटेल में बताइए, सो दैट यू नो वी कैन अंडरस्टैंड कि ये भी हो सकता है। yeah, okay. तो and to be honest, उस समय जब हो रहा था, even I was confused and I could not articulate it. मतलब मैं भी उसको रेप नहीं समझ रहा था, बिकॉज आई मीन सोसाइटी में इसकी कोई अवेयरनेस भी नहीं है, ऊपर से लॉज भी इसको इस तरह से डिफाइन भी नहीं करते. इट वाज मंथ्स एंड मंथ्स आफ्टर
that I found some very limited research having been done. I think कोई तो Western European country थी, वहाँ की research थी कि होता कैसे है, because the biology of it also confuses a man. So what I found out is, even if it is being done against your will, when a certain part of your prostate is even massaged, I'm sorry to sound very crude if that's the case, but if a certain part of your prostate is even massaged, it will involuntarily not only end up give you an erection, but eventually after some time it can also give you an ejaculation. So this is completely involuntary to your desires to even want to engage with this act. Um, yeah. So that is how she did it. I can only, I guess, speculate as to what the motives were, but I mean there were some things which became clear later, but control to get a child out of me what was became very clear soon after. Uh, he's, I mean, even the males who do this, I think a lot more than sexual gratification, it is that sense of, you know, Dominance. dominance, हाँ, किसी को दबा देना, वो फीलिंग ऑफ सुपीरियोरिटी ऑफ पावर, वो जो फील होती है, इट्स अ डिस्गस्टिंग थिंग. वो था, आई एम श्योर द सेंटिमेंट बिहाइंड इट, बट द कोर मोटिव वाज अल्टीमेटली, आई कैन बी श्योर ऑफ दैट, बच्चा चाहिए था मुझसे. एंड द या. Sure, sure. Okay, we'll leave this here. I think it in a gist. You have kind of informed us ki how does this happen, because abhi as you would be aware, India में भी marital rape law पे PIL चल रही है, जहाँ पे we are kind of stressing that it should be gender neutral, और वहाँ पे यही मुद्दा आता है कि it cannot be gender neutral because woman cannot rape a man. सो आई थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ये बहुत ज़रूरी था लोगों को समझना कि ये सिचुएशन कैसे हो सकती है. जी. राइट. दोबारा आपके स्टोरी पे आते हैं राजेश जी. आप इंडिया गए थे, आपकी रिसेप्शन हुई वहाँ पे, और तब तक आप बोल रहे हैं काफी रेड फ्लैग्स आपको दिखने शुरू हो चुके थे इनके साथ. इफ आई मे, ये शायद किसी को हेल्प करे. How you get trapped in a continuing cycle. I'm sorry, मैं थोड़ा इंग्लिश में बोल तो कोई फील प्रॉब्लम. फ्री. या um, um, आप एक अब्यूज के साइकिल में कैसे बने रहते हैं, उसका what I've learned through personal experience is that they know how to sort of abuse करना. हर किस्म का अब्यूज, ये तो सिर्फ सेक्सुअल था, रेशियल अब्यूज था, फाइनेंशियल अब्यूज था, everything except a punch in the face, you know. हर किस्म का psychological, emotional, all that. um, they do these terrible things, and then they can get, I guess there are different tactics, but then they can go quiet, they will ignore you. So then you get confused as to ये क्यों रूठे हुए हैं मुझसे, मैंने क्या किया था, इन्होंने मेरे साथ किया, ये क्यों रूठे हुए हैं. सो एक अनहेल्दी बॉन्डिंग अटैचमेंट पैदा होने लगती है शायद. एंड देन फिर कुछ अफेक्शन दिखाएंगे, थोड़ा सा अच्छे से बात करेंगे, they'll try start treating you nicely, and then again they'll go back to being quiet, distant, and then they'll मेरे साथ मतलब ऐसे हुआ था in a sort of like a monthly cycle. In looking back, I think she did it around the time of जब ovulate करते हैं, most prone to get pregnant at that time. She, mind you, she was also in her late 30s. So उसके भी शायद दिमाग में हो कि मेरा भी टाइम जा रहा है, so I'll do whatever I have to do to get pregnant, right? So I'm not that that's justified, but just thinking of the psychology of a deranged person. तो ऐसे आप बने रहते हो अब्यूज के साइकिल में. So when I went to India as well, वहाँ पे she dialed down the crazy because technically she was outside her comfort zone, her jurisdiction, and
things like that. But she was still quite abusive to my family and things like that. So इसमें just दो चीजें हैं. I was partially trying to think कि चलो pregnant है. Oh, so we found out that she was pregnant as soon as in India. So India पहुंच के soon after we found out she's pregnant. So I got even more of a idea कि ये now she's behaving this way maybe because of the hormonal imbalances a pregnant woman may face and all. So I was trying to be more understanding. Plus I was coming from a place of जो संस्कार मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिए, like any couple goes through troubles, but um, nothing like this, you know. So घर में अगर कोई बहस होती है तो कभी मम्मी रूठ गई या कभी पापा रूठ गए, but they both had this rule कि we should be stubborn enough to decide not to fight against each other so much, but rather fight for our relationship, right? So I was like, maybe यही करूँगा, you know, I will also give everything in to my relationship. But naively, I forgot that it takes two to do that, to make it successful. But I can only ensure my end of the input, ना. तो मैं अपना कर रहा था. The other person was on a different plane altogether. तो हाँ, इंडिया में भी यही हुआ. But then as soon as we were only there for a few weeks. जैसे हम वापस आए, certain revelations started happening. The abuse continued, but the certain but no, I no longer then even in India or after. So after those couple of instances of rape, I never. There was maybe one prior to going to India, one instance which was not a rape. I'm just trying to be honest. Jo hua. Um, before India. So, but during India, after India, and then never again, never got intimate with her ever. क्योंकि by that time इतनी गंदी घिनौनी चीजें बोली भी गई थी कि आपको you can't मेंटली even. स्विच ऑफ हो गए थे। हाँ, I was only then focusing कि you know my child is in her body. I just want to give everything for the child and for her to feel okay and healthy while she's carrying my child. So I put up with a lot. Yeah. राइट। एंड देन ऑफ कोर्स द बेबी वाज बोर्न, अ बॉय चाइल्ड वाज बोर्न एग्जैक्टली 4 years ago. You told me शायद आज या कल उसका 4th बर्थडे था। कल था. हाँ. कल, राइट। तो राजेश जी ने मुझे ये बताया था कि जैसे ही इनका सन बॉर्न हुआ, तब तक इनके और इनके वाइफ के जो रिलेशनशिप थे वो काफी खराब हो चुके थे, टू एन एक्सटेंट कि इनको एक्चुअली प्लीड करना पड़ा कि मुझे जब बेबी बॉर्न होगा मुझे प्लीज वहां पे रहने दीजिए, एटलीस्ट वेटिंग रूम में रहने दीजिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी देयर, टू विटनेस द बर्थ ऑफ माई चाइल्ड और एटलीस्ट सी हिम एज ही इज बॉर्न और ही और शी इज बॉर्न। जी. तो उसमें भी आपको बहुत मुश्किल से वो परमिशन दी गई थी बाय योर वाइफ कि आप वहां पे रह सकते हैं। No, नहीं दी थी. उन्होंने नहीं दी थी। ओके। नहीं दी थी. It was a day after that I was messaged by her mother कि he's born. So on the day of his birth, no, I didn't even know he was born. सो बॉर्न होने के 2 दिन बाद आपकी जो मदर इन लॉ है उन्होंने आपको मैसेज करके बताया कि एक दिन बाद. एक दिन बाद दैट योर चाइल्ड इज बॉर्न। जी. एंड उसके बाद क्या हुआ वो थोड़ा ब्रीफली बताइए। हाँ, if you don't mind, एक छोटा सा दे दो. It might give you a slightly more nuance to this. So इंडिया आने के बाद कुछ हफ्तों में ही we separated and she went to stay with her mother. Initially she was like ठीक है तुम and my parents were planning to come for my son's birth around that time to help her out and everything, but जल्दी आना पड़ा because मैं अकेला पड़ गया था. I was staying by myself and तो वो जल्दी आए and I was like मैं कुछ भी चीज में help करना चाहूँगा and all that, you know. So one of the ultrasounds जब जेंडर रिवील कर सकते हैं या
कर सकते हैं। तब गया था तो शी when the radiologist said कि मेडिकली यही बोलते हैं, 100% कोई नहीं कहता, बट 99.5% बेटा होगा आपको, you know. She was visibly angry कि लड़का है. It was just like a, in hindsight, it was just such a hatred for males almost. कि we are sort of like, बस हम एक हाँ कुछ misogynistic cultures में when they treat women like baby making factories. So on the flip side to that, this is like a man is like a glorified sperm donor, an ATM machine, and उसको use करके बच्चा तो what I sometimes deem it as a Virgin Mary syndrome. उनके सिंगल मदर्स ऑफ सुपर हीरोज वाला एक कुछ तो बैठ जाता है उनके दिमाग में. दे फील लाइक दिस चाइल्ड वाज कंसीव्ड बाय देमसेल्व्स, ऐसा थोड़ी होता है, बट एनीवे. तो या सो द कपल ऑफ डेज आफ्टर ही वाज born, while he was still at the hospital, we went and saw him for an hour each day, and then she was discharged in फिर एक हफ्ते का जब हुआ, दे वुड नॉट लेट मी सी हिम फॉर मोर देन एन आवर अ वीक, और वो भी वो टाइम पे जब वो डिसाइड करके देते थे. सो फ्राइडे को सुबह 1 घंटे के लिए आ जाना, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. और हमेशा मैं और मेरे पेरेंट्स हमेशा साथ में जाते थे. व्हेन ही टर्न्ड 1 वी वेंट देयर, और जैसे कंसर्न्ड और इवन समथिंग टू बेनिफिट हर एज वेल एज अ मदर, हम कुछ भी अगर एडवाइस दे रहे थे फ्रॉम our knowledge, नो कल्चरली इंडियन, ऐसे अगर मसाज कर दीजिए, ऐसे इनको पकड़िए तो आपको भी हेल्प होगी उसको हैंडल करने में. यू विल ऑल्सो हैव अ सॉर्ट ऑफ अ फ्री हैंड, at your disposal, that sort of a thing. These छोटी छोटी very helpful benign advices. And in response it was always ये सब आपका pagan nonsense, like backwards culture का है, sort of like a white superiority जो भी होगा उनका है. It's just disgusting attitude. And then similar thing happened when he turned 2 weeks old, which is actually the last time we've ever seen him. 4 साल का हो गया, वो 2 हफ्ते का था तब लास्ट टाइम देखा था. And do you want me to tell you why that, कब क्या हुआ था उस दिन? उस दिन का बताइए कि ये क्या वो क्यों हुआ जिसके बाद आपको बिल्कुल ही मिलने नहीं दिया? जी. उस दिन it turned out, although we are none of us are medical professionals, so उस समय exactly नहीं पता था क्या हो रहा था, but on an instinctive parental level आपको पता होता है अगर आपके बच्चे को कुछ तकलीफ हो रही है. And also going by what they themselves were asserting के बच्चा ये काफी खुशहाल किस्म का है, तभी रोता है जब भूख लगी हो या उसे nappy चेंज करवाना और क्लीन अप चाहिए. So the session was going on fine for 20 odd minutes. 1 ही घंटे का करने देते थे वो, उसकी मम्मी के घर पे ही हमेशा. And I just checked, I cleaned him up. तो उसके nappy में 40 के हार्ड ग्रेन्स थे, और उसके साथ कुछ भी फ्लूइडिटी along with it कुछ नहीं था. I showed it to my parents as well. So we had never seen a child with that sort of a symptom, kuch bhi. So we were confused honestly, and not being doctors or nurses or anything, हमें honestly नहीं पता था कि ये है क्या exactly. But then something very more obvious happened. So soon after he started crying hysterically, crazily. So the going by what they were saying कि कब रोता है, दो circumstances में. So I had just cleaned him up, but still just in case I checked again कि फिर से नहीं हो गई हो कुछ तो. But he was clean this time. And so I asked her, तुम्हें लगता है भूख लगी होगी इसे? She's like, yeah. So I said ले लो तो फिर आप इसे
And then she just kept making excuses like, नहीं अभी तुम्हारा अभी आधा घंटा कुछ बाकी है. And I said, नहीं मतलब प्रायोरिटी तो बच्चा ही है. हम तो कभी भी मिल लेंगे. Even if you fed him and he's asleep, I'm happy to just look at him lying there, you know, his beautiful face. But and then she was like, तुम लोग यहाँ हो, I feel uncomfortable. And वो बड़ा घर था, काफी rooms थे. I was like, मुझे ज्यादा इससे इससे आर्ग्यूमेंट नहीं करने थे. मैंने कहा कि देखो आपका खुद का भी रूम है, वहां कर सकते हो फीडिंग, या अगर आपको एडमेंटली यही करना है तो हम किसी और रूम में चले जाएंगे. यू विल नॉट बी मेड अनकंफर्टेबल. ठीक है. But then she just stopped talking and looked away. And for the next 20 odd minutes, he kept crying hysterically. And she did not even take a, उसके सामने नजर भी घुमा के उसने नहीं देखा बच्चे के सामने. और मेरी मम्मी बारी बारी टर्न्स ले रहे थे उसे शांत करने के लिए. एंड एट वन पॉइंट वी वर बोथ होल्डिंग हिम, हमारे छाती पे रख के उसे होल्ड कर रहे थे. तो सोचिए ये एक औरत की भी छाती है और एक आदमी की भी छाती है. तो ये बच्चा on a newborn instinctive level, when he's hungry he clearly searches breast के लिए, he tries to reach for. ठीक है. और बहुत छोटा है तो he indicates that by making certain, कुछ मुंह ऐसे बनाता है जैसे मछली पानी के बाहर ऐसे मुंह बनाती है, वैसा लगता है कि वो रीच करने की कोशिश कर रहा है. And he's so desperate that he's not even sensing कि there is nothing on my chest, right? वो बस desperate है खाने के लिए. So that broke us, you know. And then that kept on happening. And वो थक के, भूख और exhaustion से थक के वो चुप हो गया. So he got exhausted himself to sort of like a slumber. And that's when she came and like, तुम्हारा अब समय खत्म हो गया है, जाओ अब यहाँ से. तो मैंने कहा कि आई जस्ट वांट टू स्टे फॉर अ बिट एंड मेक श्योर कि ये ठीक है. कुछ अजीब हेल्थ लग रही थी इसकी. कहते हैं नहीं तुम्हारा टाइम निकल गया, जाओ. एंड देन हर मदर सेड के आप जाओ वरना हम पुलिस बुला लेंगे कि आपके एलोकेटेड टाइम से बाहर आप यू इम्पोजिंग योरसेल्फ. तो मैं अपने पेरेंट्स को ऐसी सिचुएशन में नहीं रखना चाहता था, तो हम चले गए. बट वी स्ट्रेट अवे कॉन्टैक्टेड द पुलिस, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज. सून आफ्टर वी एक डॉक्टर के पास भी गए जो चाइल्ड हेल्थ में स्पेशलाइज करते हैं. I'll tell you the doctor bit first because that's the kind of person who can give you confirmation कि ये था क्या. So he said कि अगर कभी कभी कुछ पेट खराब होता है तो ड्राई ग्रेन्स ऑफ पू हो सकते हैं, पर हमेशा रनीनेस तो होनी ही चाहिए. अगर रनीनेस नहीं है देन देर इज एब्सोल्युटली नो डाउट दैट दिस इज डिहाइड्रेशन. एंड आप सोचिए कि 2 हफ्ते का बच्चा तो, और इनफैक्ट आगे भी काफी अरसे तक वो उनका कंजम्पशन सिर्फ लिक्विड्स ही होता है. सो डिहाइड्रेशन का सवाल ही पैदा होना नहीं चाहिए. सो बट सिंस दिस इज द सिम्टम, डिहाइड्रेशन है, इस स्तर तक पहुंच गया है कि सिर्फ ड्राइनेस ही निकल रही है, दैट मीन्स कि ही वुड हैव एटलीस्ट बीन केप्ट स्टार्विंग फॉर 2 to 3 days. 2-3 दिन से उसे कुछ भी दिया नहीं गया होगा. सो आई थॉट कि एक जिस बच्चे के लिए मेरे साथ ये सब किया, उस बच्चे की भी परवाह नहीं है इससे. सबको समटाइम्स फॉर देम इट्स लाइक अ ट्रॉफी और अ टॉय. नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बट दैट डजंट, just your desire to be a mother or a father does not make you a good parent, तो कुछ. so डॉक्टर ने बट ये काफी इन हिज एक्चुअल वर्बेटिम वर्ड्स ये कहा था कि he cannot forcefully enter her premises, but the child must be taken to a doctor urgently. वरना डिहाइड्रेशन से grown ups को they can recover fairly easily, थोड़ा आराम करके पानी वानी पी के, but a baby that young with dehydration can get into a cardiac arrest, organ failures, ये सब हो सकते हैं, it can be fatal. And he said that the behavior of her seems very unnatural. So if
if just in case she did it just for this to hurt you, she could, and this was a medical opinion, right? He said, कोई भी इसे अर्जेंटली चेक कर ले इन द मैक्सिमम नेक्स्ट डे और टू, आइडियली राइट नाउ, बट मैक्सिमम डे और टू, वरना if she's bought this time, then in the next couple of days she can force feed him enough, and I'll quote him exactly, to revive the baby to a passable state. मतलब उसके बाद अगर कोई मेडिकल प्रोफेशनल चेक करता है तो he or she will not be able to trace this abuse. So it is pertinent कि अभी बच्चे को, no, firstly the motive to be to help the child, but also to एस्टैब्लिश कि ये हुआ किया गया था उसके साथ, तो बहुत जरूरी था अर्जेंटली चेक करना. For that period, the police helped her. Now, since time had passed, there was further investigations done into the conduct of the police, and in fact, the nurse clinic later I reached out to as well. Nurse clinic यहाँ पे होती है वो council, मतलब हमारे वहाँ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होते हैं वो रन करते हैं, तो गवर्नमेंट के होते हैं. So they are answerable to the taxpayers. So both of them eventually colluded with the perpetrator of child abuse to cover up the child abuse. तो पुलिस ने अपना काम किया भी नहीं, मुझे 5 दिन तक दौड़ाया. Something they had said कि हाँ हम चेक करेंगे बेबी को, although they are not medical professionals, but that's the basic thing they could do. Then after 5 days they say हमने नहीं किया, हम करेंगे भी नहीं. So just so people know कि ये जो I'm not minimizing the negligence of the authorities in India, but एक जो impression बना देते हैं इंडिया में ही पुलिस ऐसी होती, इंडिया में ही है, बाहर तो सब हंकी डोरी है, grass is greener on the other side. ऐसा नहीं होता. हर जगह पे बुरे authorities आपको मिलते हैं, and especially with this, my ex's mother being an influential person in an influential position in the community, especially in a small town. She had threatened me in the past, ke, don't try to cross us, or I know people high up in the food chain. Those were her words at the time. I didn't take too seriously of it, but then they proved how they could hurt us and a baby. So yeah, I have evidence of collusion against the police and the nurse and all, but then the judiciary सब इतने गिरे हुए हैं, they have no care or concern for, forget grown up males, छोटे बच्चे के लिए भी किसी को वो नहीं है. Partially because it is about, in the name of protecting women against accountability for actual crimes, but protecting women against even child abuse of their own children, perhaps there's the added element of a Caucasian woman against a dark guy like me. Maybe that's the case. कोई मतलब आके सामने से ये नहीं कहेगा कि we did this because you're brown and she's white. ऐसा कोई तो admit नहीं करने वाला, but we can sense a part in not giving you a fair chance to represent yourself as a father. जी जी, एंड और थ्रू आउट द होल लीगल प्रोसेस एज वेल. जो एक तो यहाँ प्लेबुक होती है, जो आई एम श्योर इंडिया में एक प्लेबुक भी है. अगर कुछ डोमेस्टिक ये कुछ हुआ है तो जाके ये धाराएं लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो, ये लगा दो. इज लाइक अ लिस्ट, ऑलमोस्ट जैसे कोच किए जाते हैं इनको, वैसे ही यहाँ है. वो धाराओं के नंबर अलग होंगे, थोड़े से अंदर इंटरकेसेस थोड़ी यहाँ वहाँ अलग होंगी, बट इट इज वेरी केटर्ड अराउंड women for them. तो वही steps follow करते हैं. रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, एंड रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स आर वेरी स्ट्रिक्ट हियर. उसको छोटी चीज भी उसे ब्रीच कर सकती है. So I have had to be very careful. Unfortunately, I've had to say no to a few times to seeing my son because they were clear entrapment attempts. फंसाने के, to make me breach the order. क्योंकि ऑर्डर ब्रीच करने से क्रिमिनल चार्ज लगते हैं, which means jail time. अब एक
क्लीन रिकॉर्ड जो मेरा है, उसके साथ भी अगर मेरे बच्चे से दूर इतने कर सकते हैं 4 साल, अब ये तो चाहते ही हैं कि मेरे पैर पे कोई क्रिमिनल चार्ज लग जाए, तो देन दे विल मेक इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू हैव हिज फादर इन हिज लाइफ ना। आई कैन, आई एम नॉट थिंकिंग कि मैं जेल गया तो मैं, आई एम नॉट थिंकिंग ऑन सेल्फिश लाइंस, आई एम थिंकिंग कि फिर मेरे बच्चे के लिए कोई लड़ नहीं पाएगा। राइट। ही इज टू यंग टू फाइट हिज ओन बैटल्स ना, सो आई एम स्टिल थिंक पुटिंग हिम फर्स्ट। मैं मेरी सोच भी नहीं रहा हूँ। राजेश जी, एक क्वेश्चन है, एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, बट बिकॉज आई कवर दीज इश्यूज, लोगों से ये काफी बार ये क्वेश्चन आता है कि अगर ऐसी मैरिज हुई है और इमिडिएटली बेबी कंसीव हुआ है, एंड देन आपके वाइफ इज बिहेविंग इन अ वे कि मुझे हस्बैंड नहीं चाहिए, मुझे बच्चा हो गया है, इन दीज सिचुएशंस एक क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है इज द पैटर्निटी फ्रॉड, वेयर a lot of times we see that बच्चा जो है बायोलॉजिकली उस हस्बैंड का नहीं होता है, वो किसी प्रीवियस अफेयर या प्रीवियस रिलेशनशिप से होता है। तो जी। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहेंगे कि वर यू एब्सोल्युटली श्योर that the son is your biological child? And as I said, don't get me wrong, but No. this is a frequently asked question. That is why, if you can tell us that, how did you actually confirm this? Yeah, I did have doubts based on certain things she had done and said. So, वो इंडिया वाली रिसेप्शन से वापस आके she had revealed a couple of things which she hadn't prior. So that's when, क्योंकि अब वापस अपने गढ़ में आ गई थी, इंडिया में नहीं थी. Pregnancy was found out about, was confirmed in India. So अब वापस आके she started telling me, I actually don't, I've never had feelings for you, I am actually into my one of my exes, right? So you just to clarify, that is one ex, and to push me away कि मैं ही इतना चिढ़ के भाग जाऊं, I get out of my child's life. This is much before he was born. But that didn't work. I'm not a quitter. So um, a week or so later, she did this again, mentioning a different ex this time. So I could not confirm if the first revelation was true or not. It could be, it may not be. The second one was confirmed to be true by even her father. Okay, I mean, okay, so she had told me long before कि उसकी एक बार शादी हो चुकी थी, and that she had converted to Islam. She didn't convert to Islam for that guy. She had already converted to Islam for her own जो भी reasons. And then they divorced, and but she had retained his surname. About 10 years past their divorce, and actually well into a marriage. That was one of the points of contention as well. I'm not one of those guys कि मेरी surname आपको लेनी पड़ेगी, all that. You can have your maiden name या जो भी, I don't mind. But it is quite ridiculous कि आप अपने ex husband की surname लेके नई शादी get into your new marriage. I think that is ridiculous. That's my view. I think इतना तो भी नहीं होना चाहिए. So you clearly are not opposed to having a man's surname. Just if you that is the case, then have this man's surname, not the guy you used to be married to now. Anyway, so that guy, again, like ये चीजें मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. As you probably have gathered so far, मेरे parents भी, मेरी family, they don't mind मैं किससे शादी करूँ and all that. I'm also like that कि ठीक है, आपका जो भी धर्म रहा होगा. And then she converted out of Islam back to Christianity. To her mom was a minister of church, and that's what padri जैसे होते हैं. None of those things matter to me, you know. जो धर्म रहा हो, ठीक है, हुई होगी शादी, मेरी भी अब हुई है. अगर फ्यूचर में मुझे कोई मिला तो आई विल बी कंसिडर्ड, यू नो, डिवोर्स या जो भी. तो that's fine. But what she didn't reveal initially and did after coming back from India and getting married and pregnancy and all that was that he had joined a terrorist organization, and not only that, she had married him with the knowledge of it at the time. This is not normal. This kind of is ये कोई नहीं एक्सेप्ट मुझे लगता है करेगा कि इस्लाम कबूल किया तो किया, छोड़ दिया जो, that's your prerogative. I don't care.
but terrorists, actual terrorists, like a UN recognized terrorist organization, right? तो ये कुछ ज़्यादा है, and her father later confirmed that is true actually. Uh, She and so wasn't मेरे in को touch doubts with ये him. लगे थे कि ये maybe Already it was 10-year old relationship. ये 10 साल पहले खत्म हो चुका था. hmm. Uh, But so I didn't know like there's certain things she was saying about when about her feelings for the other ex and all that took or ऐसी कुछ और चीज I cannot go into too many details not for time की वजह से शायद हाँ we'll stick to the DNA. तो डीएनए हाँ उसी मामले में कि आई वाज फेयरली कंसर्न्ड इनफ कि ये हो सकता है किसी और का बच्चा एंड अगेन नथिंग अगेंस्ट अ चाइल्ड बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है but I wanted assurance. So I did bring that up, and she kept dodging it. In fact, I had brought it up thanks to things like martyrs of marriage and all that. कि थोड़ी awareness थी कि ऐसा सब भी होता है. So I had brought that up prior to our wedding. And back then she was like, yeah, of course, if I don't have anything to hide, why would I resist this test? Very like, rational response. Because she had to say all the right things until her objective was achieved. Huh? So, but then she resisted until he was, I think, about a year old, close to, when enough legal pressure I was able to put on her. Then she finally did the test, and it did turn out कि मेरा ही है. I mean, थोड़ा technical detail है, but वो टेस्ट में ऐसे ही लिखते हैं 99.99999 मेडिकल सर्टेनिटी वाली चीजें आई थिंक ऑफिशियली साइंटिफिकली कोई 100 लिखता नहीं है बट दैट मींस बेसिकली ही Right. इज माय बायोलॉजिकल चाइल्ड हाँ So of course, after all this knowledge और जैसे आपने बताया जो वो लास्ट डे पे जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद इन्वॉल्वमेंट ऑफ पुलिस एंड ऑल ऑफ दैट उस दिन के बाद से आपको नेचुरली completely रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था that you will not be able to see or meet your son at all. जी और उस दिन को आज 4 साल हो गए हैं तब से लेके अभी तक यू नॉट सीन हिम. हैव यू सीन हिज फोटोज और एनीथिंग या वो भी आपने नहीं देखे सो कि हाउ पहले in the initial few months my parents used to message her के बेटा कुछ फोटोज तो भेज दो को फोटोज वीडियोस दिस दैट उसी से हम काम चला लेंगे बिकॉज आई एम नॉट अलाउड टू सेंड एनी कम्युनिकेशन ड्यू टू द रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर ना तो हाँ कुछ महीनों के लिए शी यूज्ड टू until about he was about to turn 1 जब माय पेरेंट्स प्रपोज के हमें हमें मिल लेने दो एंड देन अब मेरे पेरेंट्स वीजा पे हैं मैं परमानेंट रेजिडेंट हूँ यहाँ पे आई एम स्टिल अ सिटीजन ऑफ इंडिया बट मैं यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट हूँ आई हैव सर्टेन मोर सिक्योरिटी ऑफ स्टे हियर पेरेंट्स मेरे विजिटर वीजा पे हैं so I have to be even more careful about what she does to them if they get deported and all that तो फिर वो वापस ही नहीं नहीं आ सकते and I can't do that to them तो तो शी वाज प्रपोजिंग सर्टेन मीटिंग रिक्वायरमेंट्स ये कोविड के थोड़े रिस्ट्रिक्टिव पीरियड्स में था जहां एक आइसोलेटेड जगह पे when there are no cameras around things like that and I told my parents कि नहीं जब थोड़े रिस्ट्रिक्शंस ईज अप हो कोविड के इट हैज टू बी इन अ पब्लिक प्लेस इन अ कैफे जहाँ थोड़े कैमरास हो दूसरे लोग हो तो अगर इसने कुछ उल्टा सीधा किया या बाद में क्लेम भी किया आपके खिलाफ उल्टा सीधा तो शी कैन नॉट गेट अवे विथ इट that there is actually evidence to the opposite of what she's saying. Her father had put up with a lot of, this, that was like 35 something years ago, जब और ज़्यादा female oriented laws थे यहाँ पे. So he had put up with everything. He became, submissive हो गए थे. Like, so this time he chose not to, ये blackmail नहीं चलेगा. You cannot dictate who I see and all that. So हमने तो 4 बार उसे देखा था. उन्होंने कभी नहीं देखने दिया था. She never let him see him. Her own father, huh? Until my son was nearly 3 years old. And that's when he saw him. उस समय his meeting या जो भी he took a picture and he shared that picture with me. After that, I don't know. Even I think she is sort of
emotionally manipulated him to finally he succumbed. I think he cut contact with me. सो राजेश, एक मुझे बताइए, उन्होंने आपसे कभी कोई मॉनेटरी सपोर्ट या मेंटेनेंस जो इंडिया में बोला जाता है, या एलिमनी, कभी इसकी कोई डिमांड की है? Yeah, starting में she had already put that forward, but fortunately I was what do you call on my toes enough. At by the time of his birth and all that, I had figured out. Okay, went through my bank statements and tax returns and all that to figure out. Okay, she had actually committed a financial fraud already against me, and by that time she had also abused my child. And there is no accountable like account nahi dena padta inhe. Let's say you give child support and all that, so there is no mechanism to enforce कि वो पैसा बच्चे पे ही खर्च हो रहा है. She can use it on whatever she wants and keep the child starving. It is and but यहाँ पे गवर्नमेंट भी पैसा मुफ्त में देती है for women, for someone you had a child, she had a child. Plus, all she has to do, hearsay, no evidence investigation required. She can say family violence हो गया मेरे पे, domestic violence हो गया, और पैसे दे, government और पैसे डाल देगी आप पे. Right. So So I she, think that is a important difference between India versus an international jurisdiction. जहाँ yeah, पे इंडिया में तो स्टेट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो भी है, अगर हस्बैंड जॉबलेस है तो बेग बोरो स्टील आपको ही देना है फॉर द जी, वाइफ एंड द चाइल्ड, वेयर आप वहां पे बोल रहे हो कि एटलीस्ट देयर इज अ प्रोविजन कि गवर्नमेंट या स्टेट सपोर्ट भी है, yeah. एंड दैट आल्सो काइंड ऑफ टेक्स केयर ऑफ द मॉनेटरी पार्ट ऑफ Part, yeah, but उसने मुझसे भी जो मांगे थे, so for two reasons, I was like, अब और पैसे ऐंठने की आप ट्राई भी मत करना, क्योंकि आई हैव हार्ड एविडेंस कि आप फाइनेंशियल फ्रॉड हो. व्हाट यू हैव टेकन फ्रॉम मी, मुझे ज्यादा लड़ाइयाँ जीवन में पसंद नहीं है. तो आई वाज लाइक हर चीज में यू नो आई विल नॉट फाइट एवरीथिंग. सो व्हाट यू डन, इट्स ऑन योर कॉन्शियंस नाउ. जो मेरा पैसा गया वो गया, बट my focus is just on the child. So for the child part, I was like, as a matter of principle, after that abuse had been, we had witnessed that abuse, that would be, and when the authorities chose to collude with her and all, it would be basically me funding the abuse and the abuser of my child. जो मैं कभी नहीं करूँगा. it. But the court. Everything else that happens, as you said, na, government support Hmm. देती है and all that. Every wrongdoing from that point onwards, through whoever's finances or anything that happens to the child, will be on their conscience, not mine. My money will not be used to abuse the child. Yeah. But I'm saying court also did not pass any order against you, or they also did not force you to make these payments. So court, जिस कोर्ट में गए थे, it was for the specific restraining order वाला केस. वो अलग कोर्ट होता है, छोटा Right. कोर्ट जिसे Right. कहते हैं, आई डोंट नो इंडिया में क्या कहते हैं उसे. पर जो हायर कोर्ट होता है, फैमिली कोर्ट, वहां तो I've been struggling for 4 years to even get an application in. नो राजेश, मैं आपको ये पूछ रही हूँ, ये तो आप अपनी तरफ से बता रहे हैं, कोर्ट ने आपको पैसे देने के लिए कोई ऑर्डर पास नहीं किया है वहां पे 4 साल से? नहीं, वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर वाला कोर्ट जो होता है, दे डोंट हैव एनी अथॉरिटी टू टेक एनी मैटर अबाउट मनी एंड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड ऑल दैट. No, but she would have also gone to another court, She's or not. she has She's not not. gone to court. That's what I'm asking, that she has I, not approached the court for monetary support legally from you. yeah. Okay, okay, fair enough. So let's wrap this up, Rajesh. In the hindsight, 34 years they up when you got married. I'm sure you had a lot of dreams, like anybody will have, when we are getting married. In the hindsight, if you analyze कि दो चीजें जो आपसे शायद गलत हुई थी, and advice to all men, especially Indian men, that what are the things that at least you can keep in mind. Uske baad jo hota hai, there's no guarantee, but at least if things could have been done in a different way, if there is a message.
या सो अब ये थोड़ा अलग केस है बिकॉज ऐसा नहीं कि थिंग्स वर फाइन एंड देन वी जस्ट स्टार्टेड फॉलिंग अपार्ट, बाद में बनी नहीं, वो नहीं था। देयर वाज अ प्री डिटरमिन्ड प्री मेडिटेटेड ऑब्जेक्टिव टू फ्रॉड मी सेक्सुअली एंड एवरी विच वे, फाइनेंशियली एटसेट्रा। तो ये मतलब मुझसे ये चीज निकलवानी ही थी, तो शी वाज ऑन अ बेस्ट सॉर्ट ऑफ द बेस्ट बिहेवियर अंटिल हर गोल वाज अचीव्ड। तो उसका तो मैं क्या कहूँ, मतलब जिसको फ्रॉड करना है दैट्स व्हाई इट्स फ्रॉड ना, कि दे वर सक्सेसफुल इनफ टू फूल यू अंटिल देन। पर हाँ, एक चीज मैं थोड़ी ज्यादा जनरल है कहूंगा कि फॉर एनी यंग और ओल्डर व्हाटएवर मैन, चाहे कोई भी पार्टनर हो, आई वुड स्टिल नॉट यू नो put down the idea of marrying a non-Indian या non-Hindu या जो भी हो। Don't let those things be the obstructions. Values must be the soul and the core of it. Make sure कि आप दोनों के वैल्यूज और आप दोनों की फैमिलीज के वैल्यूज मैच होते हो। मैच मतलब मैच, यू माइट लाइक मूवीज एंड शी डजंट लाइक मूवीज, दोज आर टेस्ट्स, ठीक है, वो सब एडजस्ट हो जाता है। वैल्यूज वैल्यूज वैल्यूज, आई विल रिपीट इट 500 टाइम्स, वैल्यूज हमेशा, एंड टेक योर टाइम टू एसरटेन के एक्चुअली उसके वैल्यूज क्या हैं, दैट शी इज नॉट जस्ट सेइंग थिंग्स फॉर to make it sound nice, read between the lines, try to see her side of the family and friends also as much as possible, क्योंकि कभी ना कभी ट्रू कलर्स कितने लोग फ्रॉड करेंगे, यू नो। कहीं सो ना शी कहीं वाज, रेड फ्लैग आप पकड़ सकते हैं इफ यू आर हाँ, मीटिंग पीपल फ्रॉम हर साइड। she was successful enough to not let me talk to her father much before getting married, because he's the kind of person who पोल खोल दी होती है उन्होंने। like he's very like blah blah honest, जो है मन में बोल देते हैं, वैसे किस्म के हैं। तो that's why she would never let me be alone in the room with him, that sort of a thing, और ज्यादातर तो मिलने ही नहीं देती थी। so things like that, थोड़ा लुकआउट पे रहिए। जितने उसके बैकग्राउंड के क्लोज लोग हैं उससे जितना ज्यादा आप मिल सके उतना ज्यादा मिल लीजिए पहले, अच्छे से मिल लीजिए, बहुत सारी बार मिल लीजिए, जान लीजिए सबको, then make the big decision. So to be honest, I mean, as a matter of the fact thing, I still don't think it was that rushed. I mean, इंडिया में काफी बार लोग मिल के 2 हफ्ते में अरेंज मैरिज कर लेते हैं, तो मेरी तो इतनी भी जल्दी नहीं थी। पर हाँ, टाइम इज मोर अबाउट हाउ जुडिशली यू यूज दैट टाइम। राइट। उस टाइम में आप कितना उसको परखने की आप एफर्ट्स कर रहे हो, आपको कितनी इंफॉर्मेशन सामने से मिल भी रही है। इफ इट्स जस्ट लाइक मोनोटोनस, ज्यादा कुछ आपको पता नहीं चल रहा है, देन लेट इट ड्रैग फॉर 5 years, नो प्रॉब्लम। सब आपको कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तभी आप टेक द बिग प्लंज। और इफ यू आस्क मी पर्सनली, अब तो मुझे जेन्युइनली डर लगता है ऑफिशियली ऑन पेपर शादी करने से, चाहे इस कंट्री में हो चाहे इंडिया में हो। आई हैव अनफॉर्चुनेटली सिंस देन कम अक्रॉस वन ऑफ द रीजंस आई फाउंड आउट अबाउट यू इज दैट थ्रू दीज फोरम्स, जो कुछ लोग इंडिया के बहुत बुरी हालत में थे, लाइक वॉइस फॉर मैन हैव बीन क्वाइट, उनके रिसोर्सेज ये सब हेल्पफुल थे, एंड आई वाज लाइक एक्चुअली हो क्या रहा है, इतना कुछ सिवियर हो रहा है, देन आई वेंट इनटू द रैबिट होल ऑफ इंडियन मैट्रिमोनियल लॉज एंड ये सब, जो आई वाज लाइक दिस इज अ नाइटमेयर एज वेल। कुछ कुछ फैमिली वाले कहते हैं बैक होम के, नहीं ये तो दूसरे कल्चर की थी, इसलिए अगर अपने कल्चर की कोई होती, इंडिया में कोई होती, तो सब सही हो जाता। आई एम लाइक अगेन, आई एम नॉट putting down a culture or a religion or anything, or gender in general either. It's just the legal system in India is such so weird. I found out that harm वहां से है, औरतों से पर से नहीं है harm. It's Actually, just, wait, there is no formula, दोनों तरफ से marriage can fail. It can be because of the wife, it can be because of husband.
प्रॉब्लम एग्ज़ैक्टली। इन इंडिया इज दैट वो जो एग्जिट है वो इजी बिल्कुल नहीं है, तो अगर किसी भी वजह से फेल होती है देर इज नो एग्जिट, या तो आप अगले हुँ। 30 साल कोर्ट में लड़ो, बट देर इज नो एग्जिट. सो आई थिंक दैट इज द सैडेस्ट पार्ट ऑफ आवर मैट्रिमोनियल लॉज बैक इन इंडिया. सो वहाँ पे व्हाट आई हैव गैदर्ड इज़ यूनिलैटरल डिवोर्स आप नहीं माँग सकते। द हाँ जी. अदर पार्टी हैज़ टू कंसेंट और द कोर्ट कांट इवन ऑर्डर ऑन योर बिहाफ ऐसा है। यस. यस. देयर इज़ समथिंग कॉल्ड अ नो फॉल्ट डिवोर्स हियर। राइट. एक पार्टी भी जाके मांग ले एंड इट हैज एंड 12 months have passed since your separation, तो आप you can get a divorce without the consent of the other party. First of all, I don't want to apply for divorce. I want to apply for an annulment. There are very few conditions under which an annulment can be applied for. Fraud is one such thing जो हुआ है मेरे साथ. अब वो देंगे नहीं देंगे वो उनके biased system पे आधार है, जो है यहाँ भी biased. But an annulment being the marriage would be deemed, if I'm successful, the marriage would be deemed null and void. कि कभी जैसे legally हुआ ही नहीं था. So I would not be a divorcee. Not that that tag matters to me or anything, but just मैं थोड़ा idealist किस्म का अजीब हूँ, तो जो है वो है. And the other thing being क्योंकि मेरे बच्चे का केस फैमिली कोर्ट में अभी शुरू भी नहीं हुआ है, दाखिल भी नहीं करने दे रहे हैं, you know. So that is my priority. Okay, the divorce or the annulment thing would be for me. It's nothing to do with my son. So I want to do the thing for my son first. उसकी लड़ाई मेरे बच्चे की लड़ाई पहले शुरू होनी चाहिए. मेरे I'll do my things later. वो बात I come after my son's needs. That's my logic behind it. राइट. सो थैंक यू वेरी मच राजेश. काफी टाइम बात की हमने, मतलब आई थिंक जितना हम कवर कर सकते थे इन नटशेल हमने बात की है. होपफुली जो देख रहे हैं उनके लिए एक नई लर्निंग है. और बहुत लोग मुझे पूछते हैं मैडम प्लीज बताइए शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए. इट्स अ वेरी वेरी पर्सनल कॉल. जी. हर चीज में एक रिस्क तो होता है. सो बी प्रिपेयर्ड एंड बी फ्लेक्सिबल. आई थिंक दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. हर शादी ऐसे नहीं है कि टूटी जाती नहीं है, हो. या हर जी. औरत ये नहीं सोच के शादी करती कि मुझे इसके घर पे जाके कल डिवोर्स लेना है. सो हम्म. आई थिंक बी ओपन टू थिंग्स, बट नो द पर्सन वेल बिफोर, एटलीस्ट नो बेसिक थिंग्स. उसके साथ आप Values फाइंड again. Let's reiterate values, values, because values. as you rightly said, in India, हम still I see so many men. जैसे हमने आज लड़की देखी, परसों हमारा रोका हो गया, 2 महीने में हमारी शादी हो गई, इसके बीच में हम 1 या 2 बारी बाहर मिले हैं. आई थिंक दिस नीड्स टू चेंज. प्लीज आप प्लीज ज्यादा टाइम स्पेंड कीजिए बिफोर जंपिंग इनटू मैरिज, बिकॉज एक बार मैरिज हो गई देयर इज एब्सोल्युटली नो एग्जिट. सो ये आप ध्यान में रखते चलिए. एंड बाकी तो आई एम श्योर देयर आर मल्टीपल more examples of very very successful marriages. So be positive. I mean, And positively मैं यही कहना चाहूँगा कि even on a personal front, I just so that someone doesn't feel too disheartened by hearing all my situation, I do occasionally put myself out there. मतलब I am open to seeing someone, but I become very very cautious. yes. Right, not just because what has happened with me. Now I have to be doubly cautious because now I'm not only protecting myself, I'm protecting bringing a new person in my child's life as well na. True. So मेरा बच्चा अब आज ना कल जब भी मेरे पास हुआ, that fight will continue, पर जब भी हुआ तो he will also be exposed to this new person जो भी जब कभी हो. So I have to be even more cautious as a parent. तो अगर आपके टू whoever is listening, अगर आपके लाइफ में बच्चा भी है तो थिंक अबाउट दैट टू. डोंट जस्ट थिंक मैं अब अकेला पड़ गया हूँ, आई एम फीलिंग लोनली. नो 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 नो. नीड्स ऑफ द चाइल्ड फर्स्ट, ऑलवेज नीड्स ऑफ द चाइल्ड फर्स्ट, पहले उसके बारे में सोचिए कि इफ दैट वुमन इज susceptible or wanting to be caring towards your child as well, you know, कि फिर Absolutely. वो आगे. Everything changes once you हाँ. have a child. It's a very different situation. It's not just about yourself. But Yeah. वही है, be open to situations. Don't be extreme पे मत रहिए कि Yeah. बिल्कुल मैं नहीं करूंगा, बिल्कुल ही बच्चे के पीछे लगूंगा.
या तो हाँ। दूसरी तरफ भी मत जाइए कि आई डोंट केयर अ डैम, मैं तो अपना ही देखूँगा। सो जी, जी। whatever, I mean, you have to balance it out the way you feel it's the best in your life. And yeah, so let's wrap this up. एंड जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है या अगर आप अपने व्यूज पुट ऑन करना चाह रहे हैं, यू कैन ऑलवेज ईमेल अस एट contact@voiceformenindia.com. Our sole endeavor is to try and share these stories with as many people as possible. So प्लीज आप इनको आगे फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोग इनसे सीख सके। जैसे राजेश ने स्टार्टिंग में बताया, उन्होंने भी एक डॉक्यूमेंट्री देख के उनको थोड़ा आइडिया था कि ये चीजें हो रही है। तो let's try and spread these things as much as we can. And thank you very much for watching. We'll catch up soon with everybody again. Thank you, Rajesh. That's it. That's it from me as of now. Thank you.